Yo, what's up guys? I hope you're pretty dope. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दिस weird trend that's trending around Instagram कि भाई मेल इन फीमेल डोमिनेटेड टेरिटरी एंड ऑल ऑफ दैट, जो कि तुम रील्स देखते होगे हैशटैग करके आती है, जो women in male fields and males in women fields, you know, something like that. तो बेसिकली अगर मोटा मोटा समझाऊं कि ये ट्रेंड एक्चुअली में क्या है, इट्स बेसिकली लाइक ना तुम अपने टॉक्सिक पार्ट शो करोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ औरत, व्हाट यू हैव सीन द टॉक्सिक पार्ट्स, द बायस पार्ट्स अराउंड मैन, तुम उस पर एक जोक बनाओगे. ठीक है, जोक कम, इट फील्स लाइक प्रोजेक्शन ज्यादा. एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर वुमेन, इट्स फॉर मेन एज वेल. ठीक है, सो इट्स बेसिकली लाइक अ प्रोजेक्टिंग ट्रेंड जहां पे लोग अपनी एक्सपीरियंसेस प्रोजेक्ट करते हैं टू ट्रिगर द सेकंड जेंडर. एंड व्हाट डू यू थिंक दीज पीपल आर डूइंग? ठीक है, अगर मैं तुम्हें इस पूरे ट्रेंड का एसेंस बताऊं, मेरे को थोड़ा सा क्रिंज लग रहा था भाई ये ट्रेंड शुरुआत में, स्पेशली. अब मैं नॉन बायस नहीं होना चाहता, बट मेरे को ना पर्सनली लगता है कि लड़कियों को ये चीज लिख के ना कूल लगता है. ठीक है, कि आई वेंट देयर, हुक्ड अप विद 7 guys एंड आई केम बैक. नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू हुकिंग अप विद 7 guys एंड अ मैन डूइंग इट. यू नो व्हाई? A lot of feminists would be like pissed on me कि तू तो biased पहले ही हो चुका. नहीं भाई, इट्स नॉट biased. अगर आप मॉरली देखोगे ना तो हुकिंग अप इज बैड इन बोथ ऑफ द केसेस. लेकिन फ्रॉम अ सोसाइटल प्रेशर, मिसेस लावण्या, प्लीज लिसन टू मी. आई नो यू आर ट्रिगर्ड. लिसन टू मी. If a man sleeps with 7 women, he has to have something in him. राइट लावण्या, अगर आप एक लड़के को देखते हो, आप मेक श्योर करते हो उसके पास 6 फीट की हाइट है, उसके पास एब्स हैं, उसके पास पैसे हैं, वो अच्छा दिखता है, आपके सब स्टैंडर्ड्स पूरे होते हैं, देन यू स्लीप विद हिम. राइट, अब वो इंसान क्या है ना, आप इस दुनिया में लड़की अकेली नहीं हो, और वो कमिट नहीं करेगा आपको अकेली को. समझ रहे हो? सो ही वुड स्लीप विद 8 women, बट उसकी परसेंटेज, उस जैसे आदमियों की परसेंटेज इस दुनिया में कुछ 5 या 10 के आसपास पाएंगी. ठीक है, तो भाई लड़कियों को सब कॉन्शियसली लगा लो, कॉन्शियसली लगा लो, वो आदमी पसंद ज्यादा आते हैं जो और लड़कियां जिनके लिए मरती है. ठीक है, दैट्स जस्ट योर बायोलॉजी, योर ह्यूमन नेचर. समझ रहे हो? उसमें तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते. एक आदमी के लिए एक और पॉइंट सुनो, काउंटर पॉइंट इसका एक और पॉइंट सुनो तुम. फॉर अ मैन टू हैव सेक्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. इफ यू डोंट बिलीव मी, डू वन थिंग. आप लावण्या, लिसन टू मी, सिंस यू आर द एग्जाम्पल हियर. Go out the street and ask 10 guys out from your college. I can guarantee you one thing, 7 to 8 of them will say yes. Right? And that's a male L. I accept it. That's a gender L as a whole. I accept it. But sex for females is very easy, and simultaneously, sex for men is comparatively very difficult because we have to tick certain criterias. Okay, common sense. Now, listen to me. दूसरा एक मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वाई इट्स नॉट द सेम फॉर मैन एंड वुमेन. सिंस सेक्स इज वेरी इजी फॉर यू टू गेट, दैट्स वाई men prefer virgin females. You know why? Because that's the difficult part in your radar, having your virginity safe. Since sex is very difficult for men in this competitive, highly male environment, that's why sex is prioritized as a valuable thing here. क्यों? क्योंकि it's appreciated. ठीक है, और मैं यहां पे मॉरली नहीं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग सोसाइटल पर्सपेक्टिव से. क्योंकि जब 15 जने बैठे होते हैं ना, और एक इंसान जब पता होता है 14, हाँ भाई दिस मैन गेट्स पुसीज ब्रो, ही इज रिस्पेक्टेड. लेकिन 15 लड़कियां बैठी होती है ना, और जब एक लड़की को पता होता है कि हाँ भाई ये तो सबके साथ सोती रहती है, शी इज फ्राउंड अपॉन फ्रॉम हर ओन फ्रेंड्स. बट द गाय हु गेट्स द वुमेन, ही इज कंसिडर्ड एज अ स्टड. It's for a reason, because he has earned it. He has a societal, or you can say biological, or you can say financial, whatever reason, but he has earned it. So I hope you understand the basic concept कि भाई it's different for you to go and hook up for 7 men as compared to it is for a man to hook up with 7 women. Okay, I hope I'm done. Sorry for that. Now, अब मैं समझाता हूं ये मोटा मोटा ट्रेंड है क्या. देखो,
This trend is nothing but people trying to portray their bad past experiences in the form of humor to trigger people who are in a healthy relationship. मोटा मोटा समझ रहे हो मेरे हिसाब से ठीक है दैट्स ऑल आई थिंक इज इट इज उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा जहां पे वो ट्रिगरिंग होगा दूसरे जेंडर के लिए एंड दैट्स दे डेड टू समवन एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू टेल देम टू ट्रिगर मोर पीपल बेसिकली ओके अपने सारे जो टेनेट्स लिखे हुए हैं एक लड़की ने आई वुड वांट माय मेल ऑडियंस टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीस सो दैट दे कैन नेवर फॉल फॉर दिस ट्रैप ठीक है ओके this post is definitely getting on nerves of few fragile egos who can't take a joke when it comes to them keep downloading to prove us right. There's a difference between a joke, ठीक है? It's how to explain. अगर मैं ऐसे यूं बोलूँगा ना कि it's not a joke. Playing with someone's feelings is not a joke. Playing with someone's emotions is not a joke. You feel me? It's not a joke. मैं यहाँ पे more देखो मैंने पिछली बार मैंने क्या बोला था societally I'm saying that man is gonna be cheered for that. लेकिन morally if he's playing with someone like he's playing with someone's good intentions एक अच्छी लड़की के साथ खेल रहा है then it's wrong. यहाँ पे I'm non-biased. Playing with someone's emotions is wrong whether you're a man to a woman or you're a woman to a man. Playing with someone's feelings is wrong. You're a man to a woman or you're a woman to a man. That's totally wrong. So it's not about a joke. It's about literally giving them a trauma for the rest of your life. So if that's what you want to do as a human being and that's where you feel the superiority, good luck. Lavanya, I hope you find someone like me to give you the same thing. Anyways, let's proceed further. I'll go first by stating few statements. When he says he doesn't want to get physical with me while we were in lobby, but I anyway forced myself upon him because at that time we were in room because I thought consent was limited to the lobby only. My reasoning is so good, I know. Wow. Well, I think that would be like 9 out of 10 times it would be considered as a win. But if not, if the woman is like fat, if you have preference, I don't like fat women at all. I don't like fat women. And if a fat woman is trying to, have forced sex with you, God has given you strength. Push her away. No bitch in this world can fuck me without my will. I'm that strong. And I hope you're that strong as well. Have the balls to push her away. And I'm not saying slap her, hit her. No, push her away. Just make sure she goes 200 meters away from you. And just get the hell out of that place. That's all. And again, don't try to, push her, hit her and whatever. Because the world we live in right now is a gynocentric world. यहाँ पे a female goes to a थाना and all she says, मुझे छेड़ रहा था, तुम्हारी जिंदगी खराब हो सकती है उस चीज से. So keep 2 steps ahead of every single woman you talk to. Understand, फितरत समझो उस औरत की. Women don't have the physical power to fight because God didn't make them to. हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि kickboxing, box. Oh man, I can't deal with this world with these arguments. I swear to God. So I'm not even participating in it. The point is, they don't have the power. If I talk about an average woman and an average man, to physically pressurize you. But so second thing I would say is कि please इंसान की फितरत को समझना सीखो. अब उनके पास पावर नहीं होती that's why they know how to play emotionally they how to manipulate they know if the argument goes wrong just have to cry for example I used to date a woman ठीक है every single time जहाँ पे उसे गलती होती थी she started crying and I observed myself falling for it ही रो रही है चल कोई बात नहीं माफ कर दे and it leads to worse things believe me so it's better to just be very सुपरफिशियल कि भाई तुम ना अपनी बाउंड्रीज बना के रखो इस चीजों में ठीक है तो पहली चीज तो ये आई जस्ट एक्सप्लेन यू सेकंड वन I pull big gestures for my male friends, giving them mixed signals because I like male attention and I like to keep them hanging while I'm already in a relationship. So when my boyfriend confirms about this, I say this that I'm just trying to helpful and kind towards my male friends because they don't have any female figure as their friend being kind and helpful to them. My intentions aren't wrong. Damn, bro. I can't believe some of these men entertain women like that. जिनके male friends हैं. I can't. And that's the truth. तुम यहाँ पे कोई भी लड़की आके बोलते हैं just my friends who are being insecure and all of that. Straight fucking boundaries, bro. I don't give a damn shit.
हैव बाउंड्रीज। तुम उसको रोक नहीं सकते हो, लेकिन तुम कम से कम अपनी बाउंड्री तो बना सकते हो ना, कि आई एम नॉट गोना डेट अ वुमन हु गॉट मेल फ्रेंड्स, एज सिंपल एज दैट। अगर वो मेल फ्रेंड्स के नाम में रात को हैरियर की गाड़ी में गुड़गांव के क्लबों में घूम रही है ये कह के कि हमारा तो ग्रुप प्रोजेक्ट था, गुड लक ब्रो, यू आर टॉलरेटिंग हर, आई रियली डोंट केयर एंड नो वन इन दिस वर्ल्ड केयर। Those male friends are probably laughing on you because probably she hooked up when she was drunk. Crazy. If you're entertaining a woman like that, good luck, bro. Peace for you. Whenever my boyfriend tries to state an opinion slash fact or an idea, I simply say him that no, it isn't like that. You are wrong without even thinking once. Exactly. तुम्हें पता है एक असली जो लड़की तुम्हें प्यार करेगी ना, शी वुड बी ऑन द स्केल ऑफ अग्रीएबलनेस मोर, बिलीव मी। और जो लड़की डिसअग्रीएबल के स्केल पे ज्यादा होती है ना, 90% of the times she is traumatized from this world. She either has been used or she had a very bad past that she likes to project on every other thing. ओ छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, यू जस्ट बीइंग इनसिक्योर, ब्ला ब्ला ब्ला, छोटे कपड़े पहनो, आपको जो पहनना है पहनो, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द मैन, टीच मैन हाउ टू लुक एंड ऑल ऑफ दैट. And yeah, you know what? I can wear this bikini in the pool party. And you know what, Adi, you know what? I am secured in myself. You know I won't do anything. So why are you stopping me? No. Why are you stopping me? This is not 90 men looking at my ass, my boobs. It's okay. I'm not going there for the attention. I'm just going to jealous other girls. That's a common argument you would hear. और यहाँ पे लोग पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या है तुम लौंडों की, सबसे बड़ी आदमियों की दिक्कत क्या है इन सिचुएशंस में? They fucking start explaining. अरे पॉडकास्ट नहीं होती है जिंदगी कि तुम बैठ के एक्सप्लेन करो, उसके अंदर सेंस ठोको. इतना टाइम तो होना ही नहीं चाहिए कि तुम सेंस ठोको उसके अंदर कि ये करना, ये ठीक. एक्सपेक्ट एंड सेट योर स्टैंडर्ड अप टू अ पॉइंट जहां पे थिंग्स आर हैपनिंग लाइक द वे यू वांट इट टू. दैट्स ऑल. अब इसका ये मतलब भी नहीं कि तुम उस पर दबाव डालो लड़की पर, उसको इमोशनली यूज करोगे, मैनिपुलेट. नो, आई एम जस्ट सेइंग कि कॉमन चीज है. मेल फ्रेंड्स, ये छोटे कपड़े पहन के रात को क्लबों में गैर आदमियों की गाड़ियों में घूमना, समझ रहे हो? थर्ड चीज, दैट जस्ट मीन्स शी डजंट लव्स योर अटेंशन. अगर आपकी अटेंशन उसको इतनी प्यारी होती तो शी वुड हैव रिस्पेक्टेड यू. द ओनली टाइम women use men like this is when men allow them to. That's all. Third point. When my family tried to create pressure on me about career and job, and I take out frustration on my boyfriend even though he was trying to help me with it. Wow. What is the point of few fragile egos who can't take a joke? Because that's not a joke, that's a reality. If that was a joke, it wouldn't have been that bad. It's not fragile. I would call, आप जो भी लिख रहे हो ना, I'm with you here. Because I really want those men to feel bad about themselves. कि तुम इतने घट्टू आदमी हो कि तुम्हें तुम्हारे साथ चीजें होती है और फिर भी तुमको स्टेप नहीं लेते. भाई इतनी बाउंड्री बनाओ कि काम हिसाब से हो रहा है, ठीक हो रहा है. इतना कॉमन सेंस मर्दानगी के अंदर होना चाहिए कि अगर चीजें ठीक चल रही है तो ठीक चलने दो. जहां पे भी रेजिस्टेंस, जहां पे भी ये बेफालतू के कि मैं जाऊंगी बाहर क्लबों में घूमूंगी, चलती बन, जल्दी निकले यहां से, आ मत जाइए उल्टी. जिस रफ्तार से गई थी ना उसी रफ्तार से वहीं पे रही हो, उसकी गाड़ी में घूम भाई पूरी उम्र. अब मेरे से बात मत करियो, बात खत्म, काटता है अपना पूरी उम्र का. ये होना चाहिए. व्हाट इमोशंस, ये प्यार, व्हाट, फक इट ब्रो. Find a woman who's right to you, not a woman who's beautiful to you. On to the fact कि वो तुमको टॉक्सिकली ट्रीट कर रही है. Come on, this is common sense, please. Okay. असल में मैंने ना इसकी लिस्ट बना दी ना. असल में मैंने अगर इसकी लिस्ट बना दी कि मेल इन, you know, what's the version of women in male in women dominated fields. अगर मैंने इसकी लिस्ट बना दी, I would trigger entire population of Indian females, believe me. But I don't want to do that because I am not that. Okay. Anyways, I said to not trigger everyone. Anyways, अभी ना, have you seen that video of Mithu Dawn? कि he was making a story कि भाई women in male dominant fields and all of that. मतलब उसको ट्रेंड अच्छा नहीं लगा. Oh my god. सेम फीमेल्स कमेंटिंग, वही वो फूल के फ्लावर वाली मिस फेमिनिस्ट ऐसी सी बायो होती है जिनकी, ठीक है,
जो 15 लाइनें बाबा में लिखी होती, आई एम दैट, रेडिएशन इज कमिंग फ्रॉम माई हार्ट, आई लिव लाइक फ्री सोल. All of the Swifties got triggered. Oh, fragile egos of men, they can't take a joke and all of that. Yeah. Crazy, bro. Ugly bari. I tried to put a good girl image while chasing my boyfriend, treating him like trophy, and when I finally get it, I unleash my true filthy self, treat him so bad that he never forgets his whole life and take him for granted. Exactly. You let, as a man, these things happen. So save yourself if you can. Otherwise, you probably would relate to all of these lines and you would be offended. I'm not feeling offended right now. I'm not feeling offended. I'm not offended here. Like, I'm just offended from the fact of men that tolerate these women. I'm not offended from these women because I expect women to be like that. There are females like, I'm not offended from that. I have an understanding of that. If you want to say which thing are you offended from, I would say the only thing I'm offended from is men who tolerate these women. Okay, next one. When my boyfriend tries to break up with me, I try to fake cry. हाँ, exactly. And I swear on my mother, मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं था. And I gave you the example already. कि रोएगी तुम्हारे सामने to win our. I knew it. यही तो दुनियादारी देखने का फर्क यही होता है छोटे भाई, यही होता है. When my boyfriend tries to break up with me, I try to fake cry and beg for a second chance. When he finally gives me a second chance, I splurge on him by giving gifts, not letting him pay when we are out to cover up for my innumerable mistakes, only to make him count everything I did when he again tries to break up with me for my behavior. Wow. So basically it's like she going out and cheating, then crying like a douchebag, and then she's like, I'm gonna invest, pay and all of that, you accepted me in your life, blah blah. So उस time पे ठीक है भाई, you know, if I was that man, let me be a male in a women dominated fields. Let me be a male now. If I have a girlfriend like that, who's doing all of that, she's cheating on me, and then she's like, oh, taking me out, paying for me. You know what I would do? Let's say she cheated on me, and she's crying, and I'm like, okay, babe, I'm gonna accept you. It's fine, because she's gonna pay now, right? I'm gonna go to the most expensive hotel of Gurgaon. I'm gonna live the most posh life. And when we are done with the day, I'm gonna go to some other woman. I'm gonna sleep with her. Then I'm gonna come with again. And then I'm gonna go again out with her, spend all of her money. Then I'm gonna go and sleep with another woman without telling her. Male in women dominated fields. How many women did I triggered? Let me write here. This post is definitely getting on nerves of few fragile women egos who can't take a joke. When it comes to them, keep downvoting to prove us right. But I'm not doing that. But I hope I gave you the small taste of medicine that you was wanted to, whatever, leave it. Anyways, after breakup, I manipulate emotionally, blackmail, love bomb, stalk, pull cheap tactics, send all cheap filmy texts about him appearing in my dreams, trying hard to get him back, and how I will always wait for him for my entire life. I ranted too much, I got carried away, it's never ended, it's lol. So what's your take? Wait for him for my entire life. Oh, I manipulate, emotionally blackmail, love bomb, stalk, pull cheap tactics. A woman in love would never half-ass things. That's all I would say. ठीक है. और भाई, if you want my ज्ञान थोड़ा सा जिंदगी में चाहिए अगर तुम्हें, तो have your boundaries भाई. जहाँ पे बाउंड्री क्रॉस हो ना, एक बारी की तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस हो, ऐसे बोलो कि टाटा बाय फक ऑफ. इतनी बीटी जिंदगी मतलब किसी की भाई. That's all. I think I'm done with this trend. I'm done explaining everything. और तुम एक आदमी इसके बाद भी किसी और की रील पे जाके ट्रिगर हो रहे हो, तो just know you are not that man. Someone suffering because of that woman, and he's a dumbass. That's all. End the story. Gonna see you in the next one. Till then, peace. ध्यान रखो अपने कुछ dumbass दोस्तों को ये रील कह रहा हूँ, ये YouTube वीडियो भेजो who likes to get manipulated, who don't have any brain, और जो पागल हो रखे बंदियों के पीछे. I think bro needs to hear all of this. Gonna see you in the next one. Till then, peace. ध्यान रखो. Take care.